Okay, assalamualaikum everyone. So in this video, I found this very relevant and interesting article which will help you understand the process of conducting thematic analysis. I'll start off with how we can conduct thematic analyses. It's as I've explained in the other section. Thematic analysis is a method used in qualitative research design. It is one of the techniques of analysis which is very commonly conducted, and we can run thematic analysis on a variety of on data collected through semi-structured interviews or focus group interviews, or on content of newspaper or video content or blogs, or any descriptive form of data can be analyzed through thematic analysis. How this is done, there are few steps that we can follow to conduct this process of analysis. First of all, one needs to be familiar. One has to get familiarized with the data. In familiarization, what you actually do is you go through the data over and over again. You read through the data and you get some idea of what the interview is all about. You get familiar with the content and the nature of the descriptive data itself. So getting familiar with the data helps the interpreter, the one who's analyzing the data, the researcher obviously, to have an idea and get a clear frame of mind of what to expect out of this data. Coding is the next step of this procedure of analysis, where you assign some meaningful units of information, which we call codes, to the descriptive content. After you form codes of your description, you kind of collaborate those codes, and you form a theme. Theme is basically is a meaning that is drawn from the text or the description that you have. So you assign that theme to a collective group of codes that you form. After you generate different themes through your codes, you just review them over again, and you see that if you need to if your themes can be combined or merged together, if one of some of the codes are can be categorized into two different themes or not. So you just review if a certain pattern of themes are emerging through your theme formulated themes or not. Further, in step 5, what do you do is you define and you review your themes again, and you check if you could assign more appropriate meaningful names to your themes or not. And lastly, what you do is you come up with the conclusive report, or the findings that you draw from your emerged themes through the data. You basically conclude what you have figured out through those themes, or the descriptive or from the descriptions that you have gathered on your research question. तो आप कंक्लूड करते हो अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करते हो अपनी रिपोर्ट के अंदर, और कई जगह पे आप अपनी थीम्स के थ्रू कोट करते हो कि ये चीज़ें जो हमने एज एन एविडेंस कि आपकी सब्जेक्ट्स यानी आपकी पार्टिसिपेंट्स की जो वर्बलाइजेशन थी या डिस्क्रिप्शन थी या जो भी आप कंटेंट एनालाइज कर रहे थे, उसमें ये चीज़ें अपीयर हुई और ये थीम्स जनरेट हुई, और आप उसमें साथ साथ कोट भी कर सकते हो कि आपके पार्टिसिपेंट ने ये किस तरह से रिपोर्ट किया. अच्छा, थीमेटिक एनालिसिस यूज कब करते हैं? थीमेटिक एनालिसिस एक बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी रिसर्च क्वेश्चंस, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस, जो कि ये फिगर आउट करना चाह रहे हों कि लोगों की ओपिनियंस, नॉलेज, कंसेप्चुलाइजेशन किसी फिनोमेना के ऊपर जब हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उन पर्पसेस के लिए
थीमेटिक एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। थीमेटिक एनालिसिस जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा सूटेबल हैं थीमेटिक एनालिसिस के लिए, उनमें से कुछ सवाल एज यू कैन सी इन द लिस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस हियर could be something like, how do patients perceive doctors in a hospital setting? Again, this is a belief that a researcher may wants to study about patients in a hospital setting. Then what are young women's experience on dating sites, or what are non-experts ideas and opinions about climate change? How is gender constructed in high school history teaching? So all of these kind of questions could be studied and analyzed through thematic analyses. Coming to how thematic analyses could be analyzed, could be done. There are different approaches to form themes as well. One approach is called inductive approach, where you allow the data to determine the themes. आपके पास कोई preconceived notion नहीं होता, आप data को एक बहुत ज़्यादा novel तरीके से study करते हो, और आपके data में जो भी themes emerge होती हैं वो आपके पास first hand information आ रही होती है आपके डाटा के थ्रू। whereas deductive approach में आपके पास एक preconceived theoretical idea होता है, यानी कि existing theory के थ्रू, या आपने literature पढ़ा हुआ है अपने phenomena के ऊपर, आपने कोई already existing study पढ़ ली है जिसमें आप let's suppose आप इसमें से कोई भी सवाल ले लो कि patients कैसे perceive करते हैं hospital settings में doctors को, आपने इसके ऊपर कोई relevant study पढ़ी और आपके ज़हन में एक idea है कि patients का negative impression होता है doctors के बारे में, so आप उस idea के साथ अपने डाटा के अंदर से एनालाइज कर सकते हो थीम्स को और ड्रॉ कर सकते हो ऐसे थीम्स। तो इस तरह की अप्रोच को हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। Also, there are two distinctive approaches where you could make your themes based upon some explicit meaning of the data, or also through some implicit meaning. जिसमें इम्प्लिसिट क्या है, जो कि एक एज अंडरलाइन मीनिंग है, अगर हम उसके थ्रू थीम डेवलप कर रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल स्टेट है या कोई स्टेट ऑफ इमोशनल स्टेट है, हम उसके थ्रू हम एक थीम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम लेटेंट मीनिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम ज़्यादा सस्पिशियस इंटरप्रिटेटिव अप्रोच की तरह भी देख सकते हैं। वेराज अगर हम अपेरेंट मीनिंग की तरफ जा रहे हैं, एक्सप्लिसिट मीनिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जब हम लेबल कर रहे हैं या थीम डेवलप कर रहे हैं, तो हम सिर्फ प्योर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को देखते हुए कर रहे हैं, तो यानी कि जिस तरह से वो बात की गई है, हम सिर्फ उसी फेस वैल्यू पे थीम डेवलप कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा एक्सप्लिसिट वे में थीम्स को जनरेट कर रहे हैं। ये ज़्यादा approach of following this style is more like of what empathetic interpretive approach also does. So ये दो approaches हैं जो कि हम again themes को develop करते हुए follow कर सकते हैं। All right, so I would just go through again the process of coding, which is step 2 when when you are doing thematic analysis. This is a very important step. Let's just get a little familiar with how it is done. What are codes? Basically, codes are codes or coding ka process basically is highlighting sections of our text, usually phrases or sentences, and coming up with shorthand label or codes to describe the content. It also, we'll cover this through this example. If you could see, this is, in this text, they have given us an example of an interview extract. जब हम इस इंटरव्यू एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, तो हम इसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमें लगता है कि रिलेवेंट है या हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, अपने एनालिसिस के अंदर हम उस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर सकते हैं, और उसका हम यानी कि फॉर एग्जांपल कोड्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं कि हम दोबारा से जब अपना डाटा को रिव्यू कर रहे हैं,
तो हमारे वो जो कोड्स हैं वो हमें रिकॉल करने के लिए हेल्पफुल होंगे, हमें ट्रिगर करेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या थी. सो कोड्स बेसिकली हमारे लिए एक गाइडिंग यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें मीनिंग को ड्रॉ करने में हेल्प करता है. सो यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, मैं इसको रीड करती हूँ और आप भी इसको रीड करके फर्दर समझ सकते हो. Personally, I'm not sure. I think the climate is changing. Sure, but I don't know why or how. People say you should trust the experts, but who's to say they don't have their own reasons for pushing this narrative? I'm not saying they are wrong. I'm just saying there's reason not to 100% trust them. The facts keep changing. It used to be called global warming. तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट है इंटरव्यू का. अब इसको हमने कोट करना है. सो हम पहली लाइन में से एक इम्पोर्टेंट पीस को, यानी कि जो चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोट्स बनाए हैं. ये कोट्स बेसिकली अगेन रिफ्लेक्शन है कि टेक्स्ट पे क्या बात की गई है या इंटरव्यू के इस पैराग्राफ के अंदर इम्पोर्टेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे. अब नेक्स्ट फेज क्या है कोडिंग के बाद? जब हमने कोड्स डेवलप कर लिए, इसके बाद हमने इनमें से थीम्स डेवलप करनी है. अब you could just look into this section again. This section helps us understand about how themes are generated. Themes क्या है? Themes basically again एक तरीका है, एक अंडरलाइन मीनिंग को ड्रॉ करने का तरीका है. थीमेटिक एनालिसिस में हम कोड्स के बाद थीम्स ड्रॉ करते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो कि डाटा में से हम निकालते हैं. हम थीम, यानी कि थीम एक मीनिंग है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं. थीम्स कोड से किस तरह से डिफरेंट है? थीम्स ज़्यादा एलैबोरेटिव होते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड कहना नहीं चाहिए बट ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं. कोड्स वेराज जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है आपके डाटा का, यानी कि एक्सट्रैक्ट जो भी आपका है डाटा डिस्क्रिप्टिव एक्सट्रैक्ट है, उसको हम कोड कर रहे होते हैं किसी भी किसी फ्रेज को या किसी लाइन को किसी भी एक वर्ड के साथ, या यू कैन से फिर एज जो थीम है वो थीम बेसिकली एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेबलाइजेशन है टेक्स्ट की. इस स्टेज पे जब हम रिव्यू करते हैं, थीम्स डेवलप कर रहे होते हैं, अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम बहुत सारे कोड्स जब डेवलप कर लेते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, हम देखते हैं कि कौन से कोड्स जो हैं वो इकट्ठे ग्रुप किए जा सकते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं, अलाइक होते हैं. हम उनको इकट्ठा ग्रुप कर देते हैं और हम उनके साथ एक थीम एस्टैब्लिश करते हैं. यानी कि टेक्स्ट में बहुत सारी बार जब हम हम कन्वर्स कर रहे होते हैं, हम एक ही तरह की बातें बार बार रिपीट कर रहे होते हैं. सो हमें उस जब हम उस कॉन्वर्सेशन को ट्रांसक्राइब करके रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें बहुत बार अपीयर होती हैं इन द आंसर डिस्क्रिप्शन. तो हम उनको ग्रुप करके एक कॉमन एस्पेक्ट उस कोड का निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के अंदर उन्होंने अनसर्टेनिटी, लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस. इसको अनसर्टेनिटी, इसका एक मेन आइडिया मर्ज हुआ इन सारे कोड्स का, तो उन्होंने इसको अनसर्टेनिटी के नाम से थीम दे दिया. Changing terminology, distrust of scientists, resentment towards expert, fear of government control. ये एक group of codes है, इनको लगा कि ये ज़्यादा alike है, उन्होंने उसको group कर दिया. Distrust of experts एक main theme उन्होंने emerge किया इसमें से, इस group में से. Incorrect facts, misunderstanding of science, biased media sources. ये अगेन लाइक कोड्स थे, उन्होंने इसको ग्रुप कर दिया. सो जब ग्रुपिंग कर दी हमने कोड्स की, हमने उन कोड्स के ग्रुप्स के साथ एक थीम जो है उसने एस्टैब्लिश किया. Sometimes when we are grouping our codes, we feel that some of the codes are very vague or not so relevant, तो हम उनको discard भी कर सकते हैं. Some codes जो है वो इस तरह से भी हो सकते हैं कि वो हम उनको एक थीम का नाम दे सकते हैं. And so once we have established
the themes through the codes that we have formed. We need to review those themes again. Now we need to be sure that these themes are useful and they accurately represent the data. Here we need to return to the data set again and compare our themes against it. Again, जब हमने सारी themes develop कर ली तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारी themes जो है वो reflect कर रही हैं हमारे original data set को कि नहीं. इसके लिए हमें दोबारा से अपने data को review करना पड़ेगा. And again, जब हम एक data को review over and over again करते हैं हम उससे familiar होते हैं. So हमें देखना है कि हमारा जो थीम्स का पैटर्न है वो एक्चुअली डाटा की रिप्रेजेंटेशन है भी या नहीं. So we could check this again. For example, we might decide upon looking through the data and changing terminology fits better under uncertainty theme than under distrust of experts, since the data labeled with this code involves confusion, not necessarily distrust. So you could see that कि आपने जिस चीज को लेबल किया है एक certain तरीके से क्या उसकी लेबलिंग या उसकी जो थीम है वो सही भी है उसको वो वर्ड देना या उसके लिए कोई बेटर टर्म आप यूज कर सकते हो. यानी कि अपनी थीम्स को भी रिव्यू करना उनका नाम उनको रीनेम करना भी हमारे लिए एक पॉइंट पे हेल्पफुल हो सकता है डाटा की रिप्रेजेंटेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए. So again, defining and naming themes is an important step about of reviewing the themes and again coming up with the most appropriate terms. After once you do all of that, you need to now conclude your finding through the the themes you have established. The themes that you will form or establish from your thematic analysis will help you build a pattern of pattern or help you identify the findings on your research question, which you need to now conclude, interpret. जो भी themes आई हैं अब उनको आपने एक interpretive style में उसको report करना है कि आपने जो सवाल आपके ज़हन में था research का और जो findings आपकी themes के through आई हैं उसमें आपके जो subjects and participants हैं उनकी descriptions क्या explain करती हैं आपके phenomena के बारे में. तो आप इस तरह से उसको conclude कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे जो राइटर उसने कंक्लूड किया है कि in our example we might argue that conspiracy thinking about climate change is widespread among older conservative voters, point out that uncertainty with which many voters view the issue and discuss the role of misinformation in respondents' perception. तो यहाँ पे इस तरह से हम अपने रिपोर्ट करते हैं फाइंडिंग्स को. Thank you.